Hi everyone, this is Vasudip Panda. Welcome to Master of English. Welcome to another class, Ethics and Values, plus 3, fourth semester, Arts, Science, Commerce. All over odisha, all university, प्रत्येक सेमिस्टर रे 25 मार्क रो पाठ तो पिले पढ़िबा कौन एथिक्स एंड वैल्यूज या पूर्वर आम पढ़ी सारीचे आमर जो देवान विलेज स्टोरी पढ़ी सारीचे प्रीनाटल सेक्स सिलेक्शन पढ़ी सारीचे वुमेन एंड फैमिली पढ़ी सारीचे नहीं तो आज पढ़िबा आम जेंडर प्रैक्टिस इन द फैमिली कौन जेंडर प्रैक्टिस इन द फैमिली परिवार रे जो लिंगगत समीकरण प्रैक्टिस चली परिवार भितर जो लिंगगत असमानता चली सेटा केमती चली हाउ इट इज गोइंग एन से उपरे आमे आज आलोचना करवा ए टेक्स्ट रे स्पेशली नहीं सो मैन एंड वुमेन टुगेदर कन्स्टिट्यूट ए फैमिली मैन एंड वुमेन स्त्री एवं पुरुष उभय मिशिले गोटे परिवार सृष्टि हुए बोथ कंट्रीब्यूट टू इट्स फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट आउ मेन एंड वुमेन उभय स्त्री और पुरुष कंट्रीब्यूट टू इट्स फंक्शनिंग एटा चलवाई परिवार चलवाई आउ परिवार विकास पाई दुई जनकर अवदान जरूरी कार कार स्त्री एवं पुरुष उभयर दस इन ए फैमिली ये जदि आम देखा गोटे परिवार भितर इन ए फैमिली मैन एंड वुमेन कंप्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ईच अदर मैन एंड वुमेन कंप्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ईच अदर परस्पर परिपूरक दुईटी मुद्रार माने गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व जाको आम कहूचे दस व्हाट हैपेंस बट डज दिस रियली हैपन इन आवर फैमिलीज yes it is compulsory it is compulsory does this really happen in our families ताहले परिवार भितर ए जिनसटा हुए कि प्रकृत रे हुए कि प्रकृत रे दुई जन को समान अधिकार मिले कि इवन टुडे आजिर दिन रे इन मेनी फैमिलीज बहुत परिवार मानंकरे इन मेनी फैमिलीज व्हाट हैपेंस गाइस a woman's identity is derived from that of her father a woman's identity गोटे स्त्री रो परिचय is derived ताको कोठु परिचय मिले that of her father बापा को ना रे हैं दुई नंबर हला and the father is recognized as so called head of the family and father is recognized as the head of the so called family आ बापा को ही परिवार रो मुख्य हिसाब रे निया जाए केबे कोनोसी परिवार रे मां को मुख्य हिसाब रे कहंदे नाही जतले पिला मान को भी प्रश्न करा जाए हु इज द हेड ऑफ योर फैमिली से माने कोन कहंते माय फादर इज द हेड ऑफ आवर फैमिली माय ग्रैंडफादर इज द हेड ऑफ आवर नोबडी इज टेलिंग बुझिला तो तापर पिले जिबा सन्स एंड डॉटर्स आर नेचर्स गिफ्ट टू फैमिलीज सन्स एंड डॉटर्स पुओ जियो दे आर द नेचर्स गिफ्ट प्रकृतिर दान परिवार प्रति प्रकृतिर दान होचंती पुओ एवं झियो बट ऑफन दे आर ट्रीटेड अनइक्वाली किंतु प्राय सब समय रे दे आर ट्रीटेड अनइक्वाली से माननकु समान सम्मान मिले नहीं जेतिके सम्मान पुओ को मिले सेतिके सम्मान स्पेशली झियो मन को मिले नहीं इन मेनी हाउस होल्ड्स बहुत सारा परिवार अछंती sons are regarded as more valuable than daughters what happens sons are regarded as more valuable than daughters पुओ मानक माने झियो मानक तुलन रे पुओ मानकु बेसी मूल्यवान बोली मने करा जाए कोठी आम समाज रे आम परिवार भितरे accordingly their birth is celebrated with more pomp and their needs are given priority over those of daughters. And what happens? Their birth means a son's birth is celebrated in pomp and dignity, whereas a daughter's birth is being ignored. गोटे पुअर जिते जन्म हुए बाण फुटे नाच हुए पाला हुए दुनिया कथा हुए बट जिते गोटे झील जन्म हुए समस्ते प्राय प्राय इग्नोर करते कौन सी लोक माने ताकू इम्पोर्टेंस महत्व दियंती ही नहीं getting me so
Needs are given priority over those of daughter. This makes boys more privileged in comparison to girl. And these ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜିନିଷ ଜନ୍ମଦିନରୁ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପିଲାକୁ ଦିଆହେଉଛି ଝିଅକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲେ ବଏଜ୍ ମୋର୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ଗାର୍ଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକା ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ଅଧିକା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି ନାଇଁ while Sean is given better educational opportunities whereas educational କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ Sean is given better educational opportunities ପିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ା ହେବ ବଟ୍ ଝିଅର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଝିଅକୁ ପଠାଇ ଦିଅ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁ ଝିଅ ପଛରେ ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଝିଅ ହେଉଛି ପର ଘରକୁ ଯିବ ପୁଅଟା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେବୁ ପୁଅ ଆମର ଆଶା ବାଡ଼ି ହେଇକି ରହିବ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର କଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଡିସନ୍ and opportunities given better nutrition and access to health facility even if in comparison to girls boys are given better education facilities better health facilities better nutrition ଯେତେବେଳେ ଘରେ ହର୍ଲିକ୍ସ ତିଆରି ହେବ ପୁଅକୁ ଅଧିକା ଦିଆଯିବ ଝିଅକୁ କମ୍ ଦିଆଯିବ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ତରକାରୀ କ'ଣ ତିଆରି ହେବ ପୁଅକୁ ଅଧିକା ଦିଆଯିବ ଝିଅକୁ କମ୍ ଦିଆଯିବ ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଡ୍ରେସ୍ ଆସିବ ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଝିଅ ପାଇଁ ପରେ ଆସିବ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମାନେ ପରିବାରର ଆରମ୍ଭରୁ ଝିଅର ଜନ୍ମଠୁ ନେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅକୁ ପୁଅ ଠାରୁ ଆମେ ତଳେ ରଖୁଛେ isn't it gender discrimination ତ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା to health facility a daughter's access to such facilities is severely restricted and a daughter's access to such facilities the name of the book is Ethics and Values for semester 1 severely restricted these lay the foundation for gender based discrimination and from these things from this situation from this tradition or from this environment it is the laying stone a foundation stone of gender based discrimination ତ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତାର ମୂଳଦୁଆ ଏଇଠି ହିଁ ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରଥମ ଏଇଟାଟା ରଖା ହେଇଥାଏ ନାଇଁ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ୟୁରୋ ବୁକ୍ସ ବି ସୋ ବ୍ୟୁରୋ ବୁକ୍ସ Similarly, the socialization process varies from children on the basis of their gender. Socialization process, सामाजिक विधि व्यवस्था, समाजर चालीचलणी जो अच्छी पिले basis of their gender, it is also according to the gender. लिंग अनुसार ही था पिले नहीं. And a daughter is taught to display some typical traits, and a daughter is forced after attaining such a tender age, even if 7 and 8, when she attains the 7 and 8 years, at the time, she was being told by the mother and parents family that you are to learn such type of things that you can do at your in-laws house. तो ଯେତେବେଳେ ମାରେ ତୁ ଏବେଠୁ ରୋଷେଇ କାମ ଶିଖ କାରଣ ବାହା ହେଇକି ତୋତେ ଏଇ କାମ କରିବାର ଅଛି. It was being taught there. Traits like submissiveness କହିଲେ କ'ଣ? Obligeness. Obligeness କହିଲେ କ'ଣ ଜଣ ପ୍ରତି ମାନେ ସବୁବେଳେ କୌଣସି କଥା ମାନିକି ରହିବା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଶିଖେ. ଦେନ୍ ସାଇନେସ୍ ଲାଜ କରିବା ଶିଖେ. ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହସିଦେବ ବାପା ମା ମନା କରିବେ ଝିଅ ପିଲା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛୁ. ସୋ ସାଇନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ବି ଲେସ୍ ଡିମାଣ୍ଡିଂ. ଝିଅ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରିବ ନାହିଁ. ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ ମୋତେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର କି ନୂଆ ସାଇକେଲ ଦରକାର ସେଇ ସମୟରେ ବାପା ମା ତାକୁ କହିବେ ପର ଘରକୁ ଯିବୁ ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛୁ. ଡିମାଣ୍ଡିଂ ମୋର୍ empathetic and accommodating. empathetic and accommodating ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଶିଖାଯାଏ. ସବୁ ଜିନିଷରେ କେମିତି ସେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ସେ ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ସବୁ ଜିନିଷରେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ଏଇ ଜିନିଷ ତାକୁ ଶିଖାଯାଏ. ଆଣ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଇନସିଷ୍ଟ ଅନ୍ ଗୋଲ୍ସ ଗେଟିଂ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡୁଇଂ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ କୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକିଂ ଅପ୍ ସିବଲିଂ କେୟାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ଭେରି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍. Yeah, it is compulsory. Ethics and values are compulsory for all semester. Remember,
Ethics and values are compulsory for all semester from semester 1 to semester 6. You must read in all universities of Odisha. प्रत्येक यूनिवर्सिटी ओडिशा प्रत्येक यूनिवर्सिटी रे ethics and values are mandatory. Demanding family members. Okay, so what happens? Insist on girls getting used to doing household chores and taking up sibling cares and responsibilities. तो घर काम करिबा घर काम शिखिबा पाई झियो पिला को प्रथम रु ही बाध्य करा जाए. पिला मानकर जत्न नेबा प्रथम रु ही शिखा जाए. घरे माने लुगा सफा करिबा प्रथम रु ही शिखा जाए. झाड़ू मारिबा प्रथम रु ही शिखा जाए. Whereas गोटे पिला को कौनसी माँ बापा कहते नहीं पिला टिके झाड़ू मार देलु गलु पानी गोटे बाल्टी ट्यूबवेल आनी आइलु किए कहते नहीं बट झील को कहे तू एत बड़ हेलुनी रोसई शिखिनु नहीं. सो व्हाट हैपेंस देन how responsibility from their very childhood and it doesn't happen after she attains the adolescence age. It happens from the very childhood जेतबेले छुआ थाए 6-7 वर्ष जितेबाला हो जाए से समय आरंभ हो जाए टर्चर झील मान प्रति. एंड द वर्ल्ड सिंग्स फॉर देम व्हाइल इट एक्सपेंड्स फॉर बॉयज. द वर्ल्ड सिंग्स फॉर देम समाज ठारू दूरत्व कमी कमी जाए जितेबाला झीलटा बड़ बड़ हो जाए झीवर बयस जितेबाला बढ़ी बढ़ी जाए समाज ठारू तार दूरत्व कमी कमी जाए. जितेबाला छोट अच्छी पड़ोसी घर को गले किए कहते कि कहते कि जो टिके बड़ हो जाए पड़ोसी घर को जिते जाए घरे न कहीकि समस्त प्रश्न पचार कहीं जाइलु से घर को तू झील पिला कौन बुलुचु ये रेस्ट्रिक्शन सब लगे क्या झील किंतु जिते पिला बड़ हो जाए जो दुकान जीवार कथा उठे जो पिलाटी कहे मु दुकान जीवी ना से कह जाए तू एत बड़ हेलुनी दुकान जापर एका. सो व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन ए भेदभाव कहीं झीवर कौन अधिकार ना से कौन दुकान को जापर नहीं झीवर कौन इच्छा नहीं से बुलवाई तार कौन इच्छा नहीं बट दिस डिस्क्रिमिनेशन डज एक्जिस्ट इन आवर फैमिली आवर सोसाइटी आवर कम्युनिटीज आवर कंट्री स्पेशली नहीं. For boys, the freedom and autonomy of daughters are severely curtailed. Freedom and autonomy, स्वाधीनता एवं स्वेच्छाचारिता जाको कहि परिबा इज curtailed. curtailed कहले कट करिबा कटी जाए धीरे धीरे ता ऊपर रेस्ट्रिक्शन सब इंपोज हुए पले एंड sons are allowed to enjoy more freedom and autonomy whereas sons are allowed to enjoy more freedom and autonomy in comparison to girls. No doubt एथर संदेह नहीं today the scenario is changing. परिवर्तन होउची नहीं माने कौन परिवर्तन होउची बिले जो दृश्य पूर्वचरित प्रथा सब प्रचलित प्रथा सब हैं धीरे धीरे परिवर्तन होउची. नो डाउट scenario is changing. Girls are enrolled in larger number in school and colleges and girls are getting enrolled in large numbers in school and college. विद्यालय मानकरे महाविद्यालय मानकरे झील मानकर कौन एनरोलमेंट बढ़ी बढ़ी जाउछे. इट्स गेटिंग लार्जर. दे एक्सेल एकाडेमिकली माने शिक्षा क्षेत्र रे एमानकर माने प्रतिपत्ति वृद्धि पाउछे. नो डाउट दे आर एक्सेलिंग जेमती आईएएस टॉपर गर्ल्स आईआईटी टॉपर गर्ल्स नीट टॉपर गर्ल्स मैक्सिमम एरियाज गर्ल्स आर going ahead of boys if we'll compare especially in academic sector but this has no doubt changed family attitudes towards girls educations. यह द्वारा परिवार भितर जो मनोभावटा अच्छी झील मानकर शिक्षा पाठ पढ़ा को लेकिन जो मनोभावटा अच्छी एटा भी तो परिवर्तन माइंडसेट र परिवर्तन है नो डाउट परिवर्तन है बट प्रश्न उठे सब जगह ना है कौटी in the urban based affluent families urban based सहर मानकरे रहुथुवा affluent family affluent कहले कौन बोले धनिक श्रेणीर लोक माने सहर रे भी जो गरीब लोक माने अछंती सेठी भी ए जिंस हे नै सहर रे रहुथुवे धनी हेइथिवे से जगह रे ही परिवर्तन मैक्सिमम के तरह अच्छे हैं affluent families. Equality of opportunity in education, health services are increasingly enjoyed by girls. Equality in education and health services are enjoyed equally by girls.
तो सहर मानकरे झील मानकू पिला मानकू एजुकेशन और हेल्थ सर्विस क्षेत्र में समान सुविधा पिला मानक भली मिलुछि बट है हेल्थ सर्विसेस बट इन द रूरल पॉवर्टी स्ट्राइकन फैमिलीज जदि रूरल जीवा लोकल एरिया को जीवा जोटी गरीब लोक माने वास करते पॉवर्टी स्ट्राइकन फैमिलीज माने वास करते many girls fail to complete their school education. Many girls, maximum girls you can say, fail to complete their school education. स्कूल रू ही पाठ पढ़ारे डोरी बंधा हुए स्कूल रू ही पाठ पढ़ारे डोरी कॉलेज कौन जी स्कूल रू ही पाठ पढ़ारे डोरी बंधा हुए बोले द हाईएस्ट बिकम द लेवल ऑफ एजुकेशन जिते शिक्षा बढ़ी बढ़ी जाए जमती छुआ गला दशम तापर गला एकादश तापर द्वादश तापर ग्रेजुएशन तापर एमफिल तापर पीएचडी एवं जिते बढ़ी बढ़ी जाए कौन हुए बोले द हायर लेवल बिकम्स द व्हाट द हायर बिकम्स द लेवल ऑफ एजुकेशन द लोअर बिकम्स द शेयर ऑफ गर्ल्स इन रूरल एरियाज झील मान संख्या कमी कमी आसे पाठ जिते बढ़ी बढ़ी जाए झील मान संख्या से कमी कमी आसे द लेवल ऑफ एजुकेशन even if जदि भी they get enrolled in school and colleges school और colleges से उनको ना लिखा हुए parents send them to the education institution run by the government where investment is almost zero they are sent to government run school where investment is zero where investment is zero से मानकु भलो स्कूल को पठाऊ नाहंती पठाउछन्ती गवर्नमेंट स्कूल मान को पठाउछन दौछि पैसा लागिबो नाही माळियारे पाठ पढिबो छुआ एंड द गर्ल्स स्टिल बियर द बर्डन ऑफ डूइंग चोर्स एट होम chores chores कहले हाउसहोल्ड वर्क सो एंड स्टिल विथ देयर एजुकेशन दे बियर द बर्डन ऑफ हाउसहोल्ड चोर्स घर कामर दायित्व भी छुआ मान को ऊपर पडुछि झियो मान को ऊपर स्पेशली कोनोसी माने कॉलेज पढ़ुआ पो को बापा माँ कहना रोषे करने बट जो झीटा कॉलेज जाऊँगी तू रोषे कर तू जा ना रह जीवार दरकार नहीं ये भी चलुचे which affects their academic performance while boys are allowed to go to better education institution and totally freed from household responsibilities in comparison to girls. If we'll compare the girls and boys are totally free. They are enrolled in higher educational higher facilities educational institution having higher facilities and educational institution where high money is being paid there in comparison to girl and they are free from household responsibilities कोनोसी घरर दायित्व सेमान को ऊपर पड़े नहीं yes or no and freed from household responsibilities thus families do not provide equal opportunities यही भली जदि आमे देखिबा फैमिली कौन करूची पिले डू नॉट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बॉयज एंड गर्ल पिला एवं माने झियो और पुओ को समान सुयोग परिवार तरफ दिया जाऊ नहीं सो दिस इज अ जेंडर डिस्क्रिमिनरी प्रैक्टिस एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस लिंगगत भेदभाव चलनी जहाँ को हम कहि परिबा women provide food and comfort to all in the family as wives and mothers women provide food and comfort to all in the family as wives and mother स्त्री एवं माँ भाव रे स्त्री कौन करे माने फूड एंड कंफर्ट खाद्य खाइबा पाई व्यवस्था करे कंफर्ट आराम परिवार समस्त केमते आराम रहिबे से चिंता करे As wives, women seem to sacrifice their own comforts and happiness. And when she is a wife, she sacrifices their own comforts and happiness. तार त्याग अतुलनीय से तार निजर सुख स्वच्छंद सब त्याग करदिए कौन पाई परिवार को खुशी रखिबा पाई केबे जने माँ जेतबे झीवर देह खराब हुए बापा माने सोई जामते किंतु केबे माँ सोई पारे नाही पुअर मुंड उपरे उदा कना देकी बसी थाए जे केतळ मो पुअर देह भल हबो मो पुओ टिके सोइबो मो पुओ सोइले मो सोइबी माँ स्वर्गीय आनंद मिले जो शब्द उच्चारण कर पिले माँ happiness they eat after everyone else in the family have eaten and eat whatever little is left they eat
after all the family members have eaten and eat whatever left. ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଆନ୍ତି। କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଯାହା ବଳେ ଖାଆନ୍ତି, ନ ବଳିଲେ ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। Yes beta, yes Dipti. So eat whatever little is left. They are the prime caretaker. They are the prime, you know what, caregivers in families, and they are the prime caregivers in family. परिवार रे सबुठु जत्न नौथुवा प्राणी होउचंती स्त्री माने। They render services like cooking meals. तो काम कौन 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 करमते से माने पिले। They render services like cooking meals, रोषेई कार्य, collecting fuel, जाळेनी संग्रह करिवा, water, पानी आनिवा, taking care of children, छुआ पिलांकर जत्न नवा, husbands, स्वामीर जत्न नवा, elderly members and pets, घरे थिबा पोषा जंतुर जत्न नवा, घरे थिबा वृद्ध पिता मातांकर जत्न नवा. They spends sleepless nights, राति राति अनिद्रा ହେଇକି ରହନ୍ତି to tend members of the family when they fell ill. ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଲୋକର ଦେହ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେମାନେ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ. So look, these are the works that are being done only and only by the women in our family, in our community, in our society, in our country. So gender practices of our family have unequal expectation from men and women. Yes or no? So gender practices of our families have unequal expectation from men and women and our society. What do we do? What do we demand? So gender practices of our families have unequal expectation. Equal expectation भी न थाए रे पिले. आमे इक्वल जिंस एक्सपेक्ट न करू ना हूँ पिला ठो जहाँ एक्सपेक्ट करू झील ठारू से भाया एक्सपेक्ट करू ना हूँ. From men and women, men are not expected to do the household chores even when they have free time. पुरुष माने सेमानक पाखरे माने फ्री टाइम थिले भी केबे घरर कामरे साहाय्य करंती नाही. Not expected to do household chores when even they have free time, but women are expected to do all household chores. And in comparison to men, women are expected to do all household chores. घरर सबु काम किए करे? स्त्री माने ही करमते. Aspirations कहले इच्छा पेले. So we take them for granted. We hardly care for their wishes. तांकर भी इच्छा थाए, तांकर भी मन थाए, तांकर भी बुलिबा पे इच्छा हुए, तांकर भी ऑफिस जीवा पे इच्छा हुए, बट स्टिल तांकर इच्छा को किए गुरुत्व दियमते नहीं. Needs below. So what happens? Grandmother are the eldest surviving support system of families. They are treasure houses of wisdom and experience. प्रथम जेजेमा मानकर एटा स्त्री मानकर कथा देला. वर्तमान जीवा हमें कोन grandmother जेजेमा मानकर कथा हवा. Grandmothers are the eldest surviving support system of families. परिवार रा सबठारो माने वयस्क अभिज्ञ लोक होचंती जेजेमा माने. They are treasure houses of wisdom and experience. They are treasure houses of wisdom and experience. से माने होचंती ज्ञान एवं अभिज्ञतार गंताघर. को माने जेजेमा माने समस्तंकु भलो लागे. समस्तंकु जेजेमा जेजे बापांगठो गीत सुनिबा पई गप सुनिबा पई भल लागे पिले. Wisdom and experience. You might have enjoyed the warmth of their laugh. जेजेमांगर कोଳରେ सोइबार आनंद अतीब अतुलनीय. ता सहित कोन समान हे परिबो नाही. Warmth of their lap कहले कोळ पिले. The fascinating fairy and folk tales told by them and the unconditional love and sacrifices they lavished on you during your childhood. नहीं कौन हुए? Look at this. The unconditional love and sacrifice. निशर्त प्रेम, निशर्त भलो पाइबा है and lavished on you during your childhood. तुम जेतले छुआ थिलो, जेतले बापा बाड़ी धरिकी बाड़ेबा पे पळे आसीबे, सेही समय किए ठिया हुए? जेजेमा जेजे बापा. ए तू मो नाती को बाड़े पारिबनी, तू जेतले छुआ थिलो मो बाड़ुतिरे. तो सब बेले दे आर द सपोर्ट सिस्टम. नाती नातुड़ी मानक पई बिले ସେମାନେ ବେଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ. ବାପା ଯଦି ବାଡ଼ି ଧରିକି ପଳଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ଜେଜେ ବାବାଙ୍କ ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିବା. ମୁଁ ତ ବହୁତ କରିଛି. କ'ଣ ହୁଏ? ବାପା ଆଉ ମାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଜେଜେ ବାପା ଅଛନ୍ତି. ସିଏ କହିବେ ମୁଁ ତୋତେ ମାରୁଥିଲି, ତୁ ମୋ ନାତିକୁ ମାରିବୁ.
सो ये भल पाइबा किए दे पारिबा बेले किए दे पारिबा नहीं सैक्रिफाइस द लाइफ इज ऑन यू ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड बट व्हेन दे एज एंड ग्रो इनफॉर्म जितेबाला से माने वृद्ध हो जाते दे ग्रो इनफॉर्म कहले वीक हो जाते दुर्बल हो जाते दे आर लेफ्ट अनकेयर्ड फॉर इन मेनी फैमिलीज आज डेट रे तुम जदि निजर सराउंडिंग रे देखिबो अनेक वृद्धाश्रम तैयारी होवार लगी बहुत बुढ़ा बुढ़ी नेग्लेक्टेड होगी रहते तुम टे चिंता करवा कथा पिले आम चिंता करवा दरकार तुम नुह आम जे मुझे छुआ थी मु चली पार नी हैं मु खाई पार नी से समय मो बापा माँ मत छाड़ी दी न था आज मुझे बड़ हेली मो बापा माँ माने जो वृद्ध हो गले से मुझे छाड़देवी इजंट इट इन ह्यूमन थिंग अमनिषर कर्तव्य नुह यहाँ अमनिषता नुह So many families, their presence is not valued. Their presence is not valued. सेमानंकर उपस्थिति को के गुरुत्व दियंती नहीं. And their integration into family affairs is avoided. प्रत्येक पर्व पर्वाणी रे सेमानंक सते सेमाने अवहेलित होई कि रही जाते हैं सेमानंको आउ किए कौन करे गोल गेमर थर्ड फेज ऊपर 9:15 बेले लाइव करबा ठीक अछि थर्ड फेज जहाँ क्वेश्चन अच्छी 9:15 बेले मत पचारि पार तुम आउ 5 मिनट पर क्लास कर 2 मिनट पर 2 मिनट पर क्लास सरले मु तुमको 9:15 बेले एग्जाम रिलेटेड लाइव थर्ड फेज रिलेटेड लाइव करबी ओके आई विल बी देयर डोंट वरी efforts is avoided they feel neglected at this stage of their lives they are really in need of care and support and at this stage of life a life जीवन रो ए स्टेज रे सेमान को अधिका सपोर्ट दरकार अधिका केयर दरकार हैं अधिका जत्न दरकार किंतु दे आर नेग्लेक्टेड इन एक्सेप्शनल केसेस माने एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस माने एक्सेप्शनल केसेस दे आर फोर्स्ड टू वर्क किसी जगह रे सेमान को बाध्य करा होची कोन करबा पे पिले काम करबा पई से बुढ़ा माने 60-70 वर्ष बयस रे सेमान काम करूचंती एंड समटाइम्स गेट वर्बली एंड फिजिकली अब्यूज्ड एंड समटाइम्स बेले बेले दे गेट फिजिकली शारीरिक निर्यातना दिया होची वर्बली माने गाली दिया होची गाली बंद करा होची फिजिकली एंड वर्बली अब्यूज्ड दे आर इवन थ्रोन आउट ऑफ देयर हाउसेस एंड द हाउस दैट दे आर बिल्ट बाय देम the house that was built by them जो घरटा से माने तैयारी करथिले तांको परिश्रम रे तैयारी करथिले जो जगह खंडिक तांको नार थिला पुओ नारे कर देला परे से मान को पठै दियाउची कोठी जराश्रम just think भाबटी के so they are even thrown out of their houses this traumatizes them in society आ एहा द्वारा समाज रे एमाने कोन होचंती एमान को माने निजको नेग्लेक्टेड मने होचे तो पिला आज तो समय जाइए परवर्ती सेशन रे आमे +3 एडमिशन ऊपर कथा हवा तो आमे पढ़िबा नेक्स्ट होची हमर पेज नंबर 26 परवर्ती क्लास रे पढ़िबा आसंता काली 8:30 रे एथिक्स एंड वैल्यूज क्लास होची रेगुलरली क्लास होची जो दिन अपडेट नाही ईवीएस टा बहुत जल्दी स्टार्ट हवा विश्व डोंट वरी ता ऊपर भी चलीची मते ईवीएस टिके प्रिपरेशन हवा पे पड़िबो ईवीएस टा जेहेतु मुझे ईवीएस टा कॉलेज रे पढ़ौ नाही ठीक अछि बिले तथापि बहुत जल्दी स्टार्ट करबी ईवीएस क्लास 3 दिन एथिक्स एंड वैल्यू 3 दिन ईवीएस क्लास करबा ओके दैट्स ऑल सो पुनी थरे लाइव क्लास लाइव सेशन रे माने देखा हबो सी यू देयर स्टे ट्यून मास्टर इंग्लिश।